Guys, today we'll be talking about the one of the topic that is known as a money and banking system. Like, let's talk about the what is money. Money exchange. Money exchange is a system in an economy. Money exchange is a system in an economy that is used as a medium of exchange, as a medium of exchange. So guys, money was introduced due to a barter system. मनी वॉज इंट्रोड्यूस, जो पैसे जो इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे करेंसी जो इंट्रोड्यूस हुई थी, वॉज इंट्रोड्यूस हुई थी गाइज ड्यू टू अ पार्टर सिस्टम की वजह से, ड्यू टू अ ड्यू टू प्रॉब्लम ड्यू टू प्रॉब्लम्स जनरेटेड बाय द बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम जनरेटेड by the barter system. Now let's talk about what is barter system. बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता है गाइज, ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी गाइज, बार्टर सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई थी। और बार्टर सिस्टम बेसिकली जो हम कहते हैं गाइज, इट्स लाइक एक्सचेंज गुड्स विथ वन अनदर। हम दूसरे के साथ गुड एक्सचेंज कर रहे हैं एज अ मीन ऑफ पेमेंट के तौर पे, एज अ मीन ऑफ पेमेंट। तो गाइज दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न मैंने बात की भाई, मैंने बात की एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम, पेइंग इन द फॉर्म ऑफ मिल्क टू बाई ब्रेड। बार्टर सिस्टम क्या होता था, पेइंग, कोई भी गुड्स देते थे और उसके अगेंस्ट लाइक वी वांट अनदर गुड इन द फॉर्म ऑफ पेइंग इन द फॉर्म ऑफ मिल्क टू बाई ब्रेड। तो दैट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। अगर हमें मिल्क चाहिए, वी हैव टू पे द ब्रेड। तो दिस इज़ द वन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम्स जो बार्टर सिस्टम आई थी। फर्स्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी गाइस, वो कौन सी हुई थी बार्टर सिस्टम में? वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट अराइजेस इन द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम, जो पहले जैसे गुड्स के फॉर्म में जब हम एक्सचेंज कर रहे थे गाइस, तो बेटा हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, नंबर वन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऐसा कोइंसिडेंस होना बहुत पॉसिबल नहीं होता। जो गुड्स हम एक्सचेंज करना चाह रहे हैं विद दी अनदर, वो हमें हम उसको फाइंड आउट कर लें। Like both the parties should want each other good, that is difficult. Both parties both parties should want each other goods each other goods, which mean that I should find a person who want milk and give bread. So this is the one of the double coincidence. Like I have to find a person जिसको मिल्क चाहिए और अगेंस्ट वो मुझे क्या दे, ब्रेड दे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में जो फेस हो रही थी गाइस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकंड प्रॉब्लम जो फेस हो रही थी गाइस, जो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। सेकंड प्रॉब्लम दैट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम एंड पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस हो रही थी।
problem of divisibility and portability, that is the one of the next problem. It means it means क्या करती है guys? Portability, divisibility mean, it means that I have cow and I need eggs. I cannot give whole cow, neither can I cut its leg. I cut its leg to pay. तो गाइज डिविजिबिलिटी मीन लाइक पॉसिबल नहीं था, मेरे पास काव है और इफ़ आई वांट एग तो आई कैन नॉट गिव इंटायर होल काव लाइक इफ़ आई नीड अ एग. Portability mean it is difficult to carry the goods in exchanging the goods and services. It is difficult to it is difficult to carry the goods when exchanging with another. When exchanging with another. So that is the another problem which is faced in the barter system. तो इट्स मीन लाइक बेटा, अगर हम ये बात कर सकते हैं बार्टर सिस्टम में पॉसिबल प्रॉब्लम्स ये आई, थर्ड प्रॉब्लम डैट इज़ नोन एज नॉन ड्यूरेबल, लाइक लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं चल सकते. ऑब्वियस ही बात है, नॉन ड्यूरेबल पैरिशेबल गुड्स में बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता. लाइक एनिमल्स की एग्जांपल दे सकता हूँ, हम कितना वेट करेंगे. मिल्क की एग्जांपल दे सकता हूँ, एग्स की एग्जांपल दे सकता हूँ. तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेट्रा, इसमें बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम फेस हो रही थी. नॉन ड्यूरेबल गुड्स और पैरिशेबल गुड्स में बार्टर सिस्टम क्रिएट होना भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था. फोर्थ प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू. कोई भी गुड्स की वैल्यू को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था. difficulties in measuring value of the goods की वैल्यू को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था. That's why this is the one of the reason जिसकी वजह से बेटा बार्टर सिस्टम फेल हो गया था. डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग वैल्यूज़, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी मेजर करने में वैल्यूज़. तो दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से बेटा बार्टर सिस्टम क्या हुआ था, फेल हुआ था. दैट्स वाई मनी इंट्रोड्यूस हुआ. अब दे आर द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी. इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? One of the function that is known as function of money. If we talk about the what are the functions of money, functions mean like what are the ways to which can be used in term of money. Money should be obviously but easily accessible, easy to way to exchange. That should be a medium of exchange. First function of money is medium of exchange. Medium exchange mean money allow the goods money allow goods and services money allow good and services to be traded without the need for barter system, without the barter system, without a need फॉर बार्टर सिस्टम. लाइक हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए. जैसे पाकिस्तान में, इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान इन डिफरेंट कंट्रीज दे हैव देयर ओन करेंसीज, तो देयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ लाइक
dollar, PKR, like different currencies can be used as per the country currency. The money can be used in term of payment, the exchange of good when there is acceptability in term of money. The exchange, the exchange of goods, जब भी हम exchange कर सकते हैं goods when there is acceptability. जब भी acceptability हमारा like medium exchange should be acceptable होना चाहिए in term of money. जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक अगर मुझे कोई भी गुड्स ख़रीदने जाना है मार्केट से तो मेरा मीडियम एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लाइक PKR में एक्सेप्टेबल, इवन डॉलर में एक्सेप्टेबल. तो लाइक दैट इज़ नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. दैट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी. Another function that is known as store of value. Another function that is known as store of value से represent करते हैं. Store of value is the another function of money. In store of value, this can refer to asset whose value can be used in the future. हम कोई भी चीज़ पैसे के बिहाव पे कोई भी एसेट ख़रीदते हैं और वही चीज़ की वैल्यू हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज स्टोर ऑफ वैल्यू. द वैल्यू कैन बी रिट्राइव एट अ लेटर डेट. द वैल्यू कैन बी retrieved at later date. This means that the people can save now to fund and use later. The people can save now. The people can save now and use at later time period. And use at later time period. तो गाइस मीडियम एक्सचेंज इज़ लाइक हमारा जो मीडियम है गाइस वो एक्सचेंज है वो क्या होना चाहिए, PKR, पाकिस्तान का PKR है. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन लाइक वी हैव like purchase the goods, or even we have purchased the goods in term of money and save them and use at a later time period. That is known as a store of value. Another characteristic, another function of money is known as unit of account. Another function that is known as unit of account. Unit of accounts. Unit of account mean the unit of account refer to anything that allow the value of something. The unit of account refer to anything that allow the value of something to be expressed in a understandable way. तो कोई भी वैल्यू जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकें इन अंडरस्टैंडेबल वे, दैट इज़ नोन एज यूनिट ऑफ अकाउंट. जैसे आप कोई भी गुड्स ख़रीदने जाते हो उसकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो आप बेसिकली उसकी गुड्स ख़रीदने से पहले आप उसकी वैल्यूज़ जो है जो प्राइस होती है वो एक अंडरस्टैंडेबल वे में आपको समझ आती है, तो यू आर द वन हु परचेज द गुड्स. मीडियम एक्सचेंज का मतलब क्या होता है गाइज, हम कोई भी हमारा मीडियम जो एक्सचेंज है करेंसी का कौन सा होता है, PKR, डॉलर भी हो सकता है, लाइक डिपेंड अपॉन दी कंट्री करेंसी. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन हम पैसे को स्टोर करते हैं इन टर्म ऑफ गुड्स के फॉर्म में ताकि हम बाद में रिट्राइव कर सकें फ्यूचर टाइम पीरियड में.
यूनिट ऑफ अकाउंट कोई भी चीज़ खरीदने है उसकी जो वैल्यू है वो हमें अंडरस्टैंडेबल वे में समझ आनी चाहिए. Fourth function that is known as a standard of deferred payment. Fourth function that is known as standard of deferred payment. Standard of deferred payment. Deferred payment. Standard of deferred payment mean this refer to the expressing of the value of a debt. This refer to the expressing of the value ऑफ अ डेट. कोई भी उधार जब हम लेते हैं, कोई भी डेट्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ पीपल बोरो टुडे देन दे कैन पे बैक देयर लोन इन द फ्यूचर. लाइक दे कैन पे बैक द लोन इन द फ्यूचर में टाइम पीरियड में दे सकते हैं इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू द पर्सन who made the loan, तो ऑब्वियसली बात एक्सेप्टेबल होना चाहिए. चारों में गाइस इन 4 फंक्शंस में मेजर डिफरेंस क्या है गाइस. मीडियम एक्सचेंज जब हम गुड्स को परचेज करते हैं इट शुड बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए एज अ मीन ऑफ पेमेंट. हमारे गुड्स कोई भी हम परचेज करते हैं तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए एज अ मीन ऑफ पेमेंट. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन हम गुड्स को स्टोर करते हैं और इवन ताकि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकें एट अ लेटर टाइम पीरियड. यूनिट ऑफ अकाउंट कोई भी गुड्स जब परचेज कर रहे होते हैं उसकी गुड्स की जो वैल्यू है वो एक्सप्रेस करते हैं इन द अंडरस्टैंडेबल वे में ताकि हम लेटर टाइम पीरियड में परचेज कर सकते हैं. तो गाइज अगर हमने ये रिप्रेजेंट किया गाइज, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज़ लाइक वन ऑफ द पेमेंट जो कि हमने लेटर टाइम पीरियड में इसकी पेमेंट की है. लाइक लेटर टाइम पीरियड में हम पेमेंट कर रहे हैं और ताकि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, ताकि मैंने बात की दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो कहते हैं. तो इट्स मीन लाइक गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट इज़ लाइक यू बोरो टुडे और पे लेटर टाइम पीरियड पे आप पे कर रहे हो तो डैट इज़ नोन एज आपकी पेमेंट जो है डेफर्ड होनी चाहिए ताकि आप बाद में वो पैसे पे कर सकते हो. तो डैट इज़ नोन एज ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट से रिप्रेजेंट. नेक्स्ट जो है गाइस अगर हमने ये बात की गाइस, नेक्स्ट जो है बेसिकली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. What are the characteristics of money? Like what can be the characteristics of money? What are the importance of money? अगर if we talk about तो what are the characteristics of money? So one of the characteristic that it is the money should be acceptable. Like हर जगह acceptability होनी चाहिए. First characteristic of money is known as that money should be acceptable when we are exchanging the goods. It should be acceptable होना चाहिए. So first characteristic that is known as of a money is money should be acceptable. It's mean like uh, money should be acceptable in the exchanging the good and services. So it all the time it should be acceptable
when we are exchanging the goods in term of money with the another. So it's mean like all people should readily accept it. हर जगह accept होना चाहिए. all people all people should readily accept it. आपकी जो पैसे हैं डिविजिबिलिटी होनी चाहिए. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी डिविजिबिलिटी. money material money material can be easily डिविजिबल होना चाहिए. डिविजिबल मीन डिवाइडेड होना चाहिए इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन में, स्मॉल पार्ट में. डिफरेंट वैल्यूज में डिवाइड होना चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज में. without losing its value. आपकी जो मनी जो होना चाहिए वो डिविजिबल लाइक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज में, विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू. अपनी वैल्यू को आप लूज ना करो. तो मनी शुड बी एक्सेप्टेबल, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए. पोर्टेबिलिटी मीन कैरी करना आसान हो. इट कैन बी easily ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू another. इट कैन easily transported from one point to another and can be carried around easily. आसानी से कैरी अराउंड ईजिली, हम आसानी से कैरी कर सकते हो. तो हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए. डिविजिबिलिटी मीन स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, लाइक लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए. ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. आपके मनी शुड बी मनी कैन बी मेड ऑफ डेट मटेरियल. उस मटेरियल से बनाना चाहिए डेट विल लास्ट फॉर सम टाइम. जैसे एग्जाम्पल मेटल यूज़ करना चाहिए, पेपर यूज़ करना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं, नॉट फॉर्म ऑफ पेरिशेबल फॉर्म के फॉर्म में. आपके पास हमेशा मनी जो है गाइस इट शुड बी स्कैर्स होना चाहिए. स्कैसिटी. मटेरियल chosen for it should be relatively scarce, limited होना चाहिए ताकि उस वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन की तरफ ना जाए. ड्यूरेबिलिटी हर जगह एक्सेप्टेबल. डिविजिबिलिटी स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर वैल्यूज में डिवाइडेड होना चाहिए. इजी टू पोर्टेबल. ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग. स्कैसिटी. Even last is homogeneous.
लास्ट इज नोन एज होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। एवरी नोट, एवरी नोट और कॉइन of the same value should be exactly the same value should be exactly the same। तो पैसे आपके पास क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। तो दीज आर द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी फेल क्यों हुआ था, मनी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द वाटर सिस्टम फेलियर। वाटर सिस्टम फेलियर हुई तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। So we have a two banking system that is known as, one of the banking system that is known as a central bank, commercial bank। So one of the banking, if you talk about the banking system that is known as one of the bank that is known as a central bank, and another bank is known as a commercial bank। Another bank that is known as central bank। So central bank is known as which is owned and controlled by the government। Central bank कौन control करता है? It's like a government is the one जो कि central bank government own करती है बेटा। So we talk about the one of the banking system that is known as a central bank, and another bank that is known as a commercial bank। We have a two type of the banking system. One is the known as central bank, another bank is known as a commercial bank। So central bank is owned by the government is the one जो कि central bank चलाती है। the central bank the central bank is responsible for issuing the monetary policy। like monetary policy issue करने वाला कौन होता है? सेंट्रल बैंक। और monetary policy is entirely depend किसके ऊपर होती है? depend upon interest rate। दिस इज़ द वन ऑफ द पॉलिसी जो कि डिपेंड अपॉन किसके ऊपर होती है? इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये पॉलिसी डिपेंडेंट होती है। गवर्नमेंट ओन एन अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक। like government is the one who own the account in the central bank। government owned an account in central bank। central bank is the one who all the tax government expenditures managed in that account। all tax revenues and government expenditure is managed in this account is managed in this account। the central bank control the bank the central bank is known as the central bank who lend the money to the commercial bank। the central bank lend money to commercial bank, that's why they are called the lender of last resort to commercial bank। that's why they are called lender of last resort। Central bank is the one of the bank which is owned and controlled by the government।
Central bank is only one of the bank that issue the notes in the country. All the commercial bank have follow all the commercial banks, even all commercial bank have to follow the rules and regulations. The rules and regulations are set by the central bank. By the central bank is the one. Central bank Central bank is always prepared to land it, or even central bank not issuing the authority in a country's central bank set interest rate interest rate according to the रिजर्व जितने रिजर्व में पैसे होंगे उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट सेट करता है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ नोन एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से कहते हैं. कमर्शियल बैंक जो है गाइस अनदर जैसे मिज़ान बैंक, HBL बैंक, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कमर्शियल बैंक के थ्रू होती हैं. कमर्शियल बैंक इज़ द वन ऑफ द बैंक जिसको कहता है कमर्शियल बैंक इज़ प्राइवेटली ओन. अ कमर्शियल बैंक is privately owned profit seeking institution whose main activities are to accept deposit accept करना and make loans. Commercial bank is privately owned. This is the one of the bank which is privately owned, or this is the one of the bank which is owned by the government is the one. Entire decision is taken by the government. Commercial bank, they provide the loan with the money invested and get interest in return. They provide loan with the money invested in them and get interest in return. Commercial bank, in commercial bank they are the current accounts, saving accounts. These are the मैंने बात की commercial current account, saving accounts provide services to the consumers, provide these services to the consumers. Commercial banks, or even in the form of credit cards, debit cards. These are the one of the services that is provided by the commercial bank. Commercial bank providing convenient mean of making payments
payments, and even they are the one, the commercial bank is the one of the bank also provide services like issuing bank draft, bank draft, foreign exchange, foreign exchange, pension plans. Commercial bank is known as privately owned, or central bank is entirely controlled by the government. These are the one of the functions of the central bank, or these are the one of the function of the commercial bank. I hope it is clear to everyone. Thank you so much.